Hello, my dear children. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, my name is Vandana and we are doing Maths, Class 4. Children, this is a book and the name of the book is Joyfull Mathematics. So, let's start a new chapter today. This is chapter number 9 and the name of the chapter is Unitary Method. So, children, here an activity is given. Let's do that first. Here you can see so many pictures are given. In the first picture you can see there are 4 burgers and the cost of 4 burgers is 120 rupees. Now 6 cold drinks cost rupees 120. 8 ice creams cost rupees 200. 4 chips packets cost rupees 20. 10 pencils for rupees 20, 2 toy cars for rupees 120. So now what you have to do, you have to find the cost of 1 burger, 1 cold drink, 1 ice cream, 1 packet of chips, 1 pencil and 1 toy car. So यहाँ पे आपको हर चीज का एक अमाउंट दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन थिंग. सो लेट्स फाइंड आउट. So if 4 burger cost rupees 120, so what will be the cost of 1 burger? For that what we do, we divide 120 by 4. 4 से हम 120 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे and what we will get, this will be the answer. So here the cost of 1 burger is 30 rupees. Similarly you can find the cost of each one of these and write it here, rupees 30. The unitary method is used to solve different problems. यूनिटरी मेथड को हम यूज करते हैं किस लिए, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ. हमारी लाइफ में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. यूनिटरी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, और ये जो यूनिटरी वर्ड है ये यूनिट वर्ड से बना हुआ है एंड यूनिट मींस वन. नाउ नोट द फॉलोइंग ऑपरेशंस. व्हाट वी हैव टू रिमेंबर. द फर्स्ट पॉइंट इज when the cost of many articles is given, you divide the price by the number of article to find the cost of one article. So children, here it's written कि जब बहुत सारी चीजों का कॉस्ट दिया हो और हमें एक का कॉस्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो टोटल अमाउंट है उससे जो नंबर ऑफ थिंग्स है उसे हम डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि हमने किया था. एंड उसके बाद क्या निकलता है, द कॉस्ट ऑफ वन item. Second point क्या कहता है, when the cost of one article is given, we multiply it by the number of articles. जब एक आर्टिकल का कॉस्ट दिया होता है हम क्या करते हैं, उसे मल्टीप्लाई करते हैं ज्यादा आर्टिकल्स की प्राइस निकालने के लिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बॉल का कॉस्ट दिया हुआ है विच इज 15 रुपीज. अब जो आपको 4 बॉल के कॉस्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, 15 मल्टीप्लाई 4 विच इज इक्वल टू 60. Now, so in the above two operations, दोनों ऊपर क्या एग्जांपल्स हमने जब पढ़े तो हमें ये पता चला कि we find the cost of one article by division method. अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट निकालना है तो हम डिविजन मेथड यूज करते हैं. एंड व्हेन वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेनी आर्टिकल, जब हम मेनी आर्टिकल्स ज्यादा आर्टिकल्स के कॉस्ट निकालते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. Hence unitary method involves both the operations. इसलिए जो यूनिटरी मेथड इसमें दोनों ही चीजें होती हैं. क्या क्या, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों चीजें होती हैं. Now unitary method does not work when quantities do not change in proportion. ये मेथड तब काम नहीं करता है जब जो है when quantities do not change the proportion, जब quantity अपना proportion change नहीं करती है. So I hope that you have understood it. Now let's do the exercise. Exercise number 9.
Here let's look at the first question. The first question says there the 8 book cost rupees 320. So the cost of 8 book is 320 rupees. Now how much is the cost of 16 books? अब आपको क्या करना है, 16 बुक्स के कॉस्ट निकालने हैं. तो 16 बुक का कॉस्ट हमें तभी पता चलेगा जब हमें एक बुक की कॉस्ट पता होगी. So let's find the cost of one book, and the cost of one book is 320 divided by 8. So जब हमने 320 को 8 से divide किया, so what we get? We get 40. So here the cost of one book is rupees 40. अब हमें क्या करना है, 16 बुक का कॉस्ट निकालना है. So cost of 16 books. तो जब हमने 16 books का cost निकाला, so what we are going to do? We have to multiply this rupees 40 with 16. So what answer we are going to get? When we multiply these two, we are going to get the answer 640 rupees. So this is the cost of 16 books. So let's write down the answer here, 640. Is it clear? Now let's do another question. Question number 2. So here the pair of socks, 10 pair of socks are there, and the cost is, you have to slash down this edge from here. Now the 10 pair of socks cost rupees 60.50, means 60 rupees and 50 paise. Okay, now what you have to find? You have to find the cost of 4 pair of socks. So पहले हम 1 pair का निकालते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे? We have to divide 60.50 by 10. Clear? अब हमें क्या करना है, 4 पेयर का निकालना है. तो वी आर गोइंग टू राइट 4 पेयर इज इक्वल टू 60.50 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 4. सो चिल्ड्रन, हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. नाउ जब हमने इसे 10 से डिवाइड किया तो इट विल बी 6.05 मल्टीप्लाई 4. अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24.20 रुपीज. मीन्स आपको ये जो 4 पेयर ऑफ सॉक्स मिले हैं वो कितने में मिले हैं? 24.20 रुपीज में मिले हैं. सो आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी. नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. लेट्स राइट डाउन द आंसर 24.20. Clear? Now let's find the cost of another question from another part. So here 5 sugar packets cost is given. 5 sugar के 5 packets हैं, उनका cost है 1200 rupees. So 5 packet is equal to 1200 rupees. Now what is the cost of 10 packets? You have to find the cost of 10 packets. So 1 packet का निकालेंगे. So it will be 1200 divided by 5. और जब हमने 10 packets का निकाला, it will be 1200 divided by 5 multiplied by 10. I think it's clear to you. अब हमने जो ऐसे जो है solve किया जब, so we get the answer. It's 2400. It's rupees 2400. I hope it's clear to you. So similarly, children, you have to do the rest of the questions here. Let's write down the answer. It's 2400 rupees. Clear? So similarly, you have to complete till question number 12. So children,
I hope that you have understood the chapter unitary method. And what do we do in this method? We find the cost of one thing and then we can find the cost of many things. So children, I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay lated.